so far whatever we done, okay, especially on non-linear properties and filters. So we'll do some problems. Okay, so this is, we have one resistance of 100 kilo ohm. Okay, and V input is given -1 volt. Okay, this is, we have one diode here. Then attached one 4 kilo ohm resistance, and he asking what is the V naught. Okay, so since this is a inverting amplifier or non-inverting amplifier? Inverting amplifier. Okay, so this is grounded, so this will be 0. Okay, and he says the I saturation that is I naught is given 1 microampere. So how can we calculate? Suppose कैसे करेंगे कैलकुलेट बताओ? Diode is there and you know I naught. Okay, so here we have 0 and this is -1. 0 -1, okay, upon 100 kilo ohm, that will be your I. Okay, this is 1 by 100 kilo ohm, 10 to the power 5. That is 10 into 10 to the power -6. That is 10 microampere. ठीक है, मिस्टेक तो नहीं है? So this is 10 microampere current is flowing. So this current is flowing from what? 0 to here. That means same current should come here. Okay, so Yes, this is V, this is V0. Okay, same current should come here. That means we have given diode current. कितना आना चाहिए? If this current is coming here, so diode current is what? I naught क्या आएगा? Exponential EV by deputy. okay, E B upon VD upon VT if we take n equal to 1. Okay, and सर करंट उल्टा क्यों जा रहा है सर? तो तुम बताओ क्यों जा रहा है? यहाँ पे 0 दे रखा है ना? यस सर, -1 दे रखा है. यस सर. तो ये वो जहाँ तो 10 पॉजिटिव से नेगेटिव. तो 0 से ये माइनस है, 0 ज्यादा Yes. पॉजिटिव है, माइनस से है. ठीक है, यस इसीलिए करंट इधर जा रहा है. अब यहाँ पे तो कोई करंट जाएगा नहीं. अब ये करंट आ रहा तो यहीं से आ रहा होगा. यस ठीक सर, है, यस सर. इसका मतलब ये यहीं से आ रहा है इधर वो. सो से वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस, यहाँ पर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा बताओ? यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? सो 4 किलो ओम voltage drop across R. Okay, so voltage drop across 4k ohm. So 4k into 10 microampere. तो कितना वोल्ट हो गया ये? 10 4. ओके, 0.04 volts. ठीक है, एंड द वोल्टेज अक्रॉस VD. ओके, VD कितना हो जाएगा? VD कितना हो जाएगा बताओ? V output 0.4. Okay, so your VD will be V output minus 0.04. 0.04 volt. Okay, now you have to calculate VD. So VD you can calculate for this equation, you know this one. Okay, and I naught is given, I you know, so you can calculate your VD. Okay, put the values and calculate. So I is given 10 microampere. Okay, I naught is given 1 microampere. Exponential E VD upon VT -1. ओके, सो कैंसिल हो गया. ठीक है, तो कितना आएगा अभी ये? सॉल्व करो इसको.
आई नॉट तो सॉरी यहाँ तो रहेगा ही आई, हाँ कैंसिल हो गया ये। अब कितना आएगा बताओ, सॉल्व करने पे कितना आएगा बताओ। सो एक्सपोनेंशियल v अपॉन वी डी माइनस वन, ओके। सो दिस इज कैंसिल, ये माइनस तो यही, पर इग्नोर कर ये माइनस यहीं पे होता है क्या? नो, दिस नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन, ओके। दिस इज वी डी अपॉन वी टी माइनस वन, ऐसा होता है एक्सप्रेशन, ओके। यस सर, दो एक्सप्रेशन हाँ हाँ वो गलत लिखा हुआ है। सो देन वी हैव 10 माइक्रो एम्पियर, just 1 minute, 10, okay, and exponential vd upon vt, okay। so ये कट गया और यहाँ का जो 1 है इधर चला जाएगा तो ये 11 हो जाएगा, okay, 11। so vd upon vt will be ln 11, okay। now what you want vd, vd will be vt कितना है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स into ln 11, okay। कितना आएगा सॉल्व करो, ln 11 कितना आता है, ln 11 की वैल्यू कितनी है? So I need V naught. So V naught will be VD plus 0.04. Okay, and VD will come from here. कितना आ रहा है? 0.09 पूरा बता रहे हो VD बता रहे हो? VD कितना है? वीडी नहीं पूरा बता रहा VD कितना है? 0.05 पे कितना है? 0.05 0.05994 0.0599, ठीक है इतना ही लिखते हो 0.04, ओके। तो ऑलमोस्ट ये आएगा 0.1 वोल्ट्स V नॉट, 0.99 समथिंग आएगा, ओके। 0.05 0.059 तो 0.99 समथिंग आएगा, दैट इज ऑलमोस्ट 0.1 इलेक्ट्रॉन, 0.1 वोल्ट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। हाँ सर, हाँ तो करंट तो हमारा 10 माइक्रो एम्पियर था ना, तो 11 हाँ कैसे दे? 11 नहीं लिखा, 10 ही है भैया, 10 ही है। यस सर, यहाँ का एक 1 था ना, इधर का एक 1 था, ये तभी तो मैंने फॉर्मूला लिखा था ना, एक 1 यहाँ पे भी था। दिस इज अच्छा यस सर, तो कैंसिल हो गया, ठीक है 1 उधर गया, 11 हो गया। ओके 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 ओके, तो लॉन 11 VD इक्वल टू दिस वन। क्लियर है? यस सर, आगे चले। यस सर। Okay, so we have one more beautiful problem, okay, on diode. So this is resistor is given, okay, and this is we have diode, and this diode is coming here. V naught, this is 2 kilo ohm, okay, this plus minus V naught, okay, and here we have given V input. So in question it is saying when V input equal to 2 volts, when V input equal to 2 volts, we have V0 equal to V01, okay, and when V input equal to 4 volts, okay, I have V naught equal to V naught 2. This is the condition, okay. So you have to find V naught 1 minus V naught 2 का वैल्यू पता करना है आपको, okay. So when you're applying 2 volts, you're getting some output, okay, V naught 1. तो आपको पता करना है, कैसे करोगे इसको पता? So first of all, say this is 0, this will be also 0. Now this is the forward current following, say this is VD. So now forward current in first case, so in first case you have V input minus 0 upon 2 kilo ohm, okay, and that is your forward current. ये जो current आएगा यहाँ से V input minus 0, that will be forward current, and that forward current will be now IS, okay, or exponential
VD upon VT. ओके, माइनस में हटा दे रहा हूँ, नेग्लेक्ट करके हटा दे रहा हूँ क्योंकि मिली एम्पियर में करंट दे रहा है ना इसमें. सो IS इक्वल टू एक्सपोनेंशियल VD upon VT. Okay, so this is the one equation. So I have V input 2. So 2 into 10 raised to power 3. Okay, IS एक्सपोनेंशियल VD. यहाँ VD और V0 में क्या रिलेशन है? 0 minus V0 equals to VD. So VD plus V0 equals to 0. So that means VD equals to minus V0. और इस केस में जब V इनपुट लगा रहे हैं तो हमारा V0 कितना है? V0 1. Okay, so I can write here, this is first case V0 1. So VD equal to minus V0 1. Okay, so I can write here minus V0 1 upon VT. This is our first equation. Okay, similarly you can make second equation. Second case में 4 है, so 4 into resistance 2 kilo ohm ही है, 3 IS exponential, okay, minus V0 2 VT. Okay, now दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो और V0 कैलकुलेट कर लो. So if you divide both equations, okay, so what I'll get? 2 exponential V0 2 upon VT upon exponential V0 1 upon VT. Now you can solve it further. So 2 will be equal to exponential, okay, V0 1 minus V0 2 upon VT, okay, and V0 1 minus V0 2 equal to ln 2 VT ln 2. Okay, and VT, you know what is KT upon Q. Okay, ln 2. This is the answer. Yes, sir. Okay, चले आगे. Yes, sir. Yes, sir. शिवेश, Yes, sir. Yes, sir. बस एक क्लास और करेंगे ओपन पे कल, अच्छा, उसके बाद खत्म सर. उसके बाद सॉलिड. ओके, तुम लोग क्वेश्चन कर रहे हो नहीं कर रहे हो आगे पीछे के? सर कर रहे हैं सर. थोड़े थोड़े हो रहे हैं लेकिन कर रहे हैं. कहीं दिक्कत आ रही है क्वेश्चन करने में? नहीं सर, एक्चुअली एग्जाम्स भी हम लोग भी चल रहे थे ना सर, तो थोड़ा कम कम टाइम दे पा रहे हैं. अच्छा, now let us solve one more problem. We have minus plus. Okay, this resistance is given 1 kilo ohm. We have V input, okay, and then we have a resistance, capacitance V0, okay, and that is 10 nanofarad, and here we have a resistance, okay, R2, and then we have, this is grounded. So what is asking? He asking the cutoff frequency FC is 5 kilohertz for this circuit, okay. Then what is value of R2, okay, in kilo ohm? R2 की वैल्यू क्या है अगर इस सर्किट की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखी है? ओके, तो अभी इस फंक्शन को लाना पड़ेगा हमको, ट्रांसफर फंक्शन लिखना पड़ेगा इसका, हमको गेन लिखना पड़ेगा इस फंक्शन का, इस सर्किट का. तो गेन लिखो, सर्किट का गेन कितना होगा? तो सपोज दिस इज 0, ओके, सो दिस करंट इज कमिंग हियर and this will divide here and here. So if I want to write KCL, I can write V input 0 upon R1, okay, R1 which is given 10 kilo ohm this case, no, R1
yes. And हाँ सर, हाँ तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं जैसे जेड एफ। हाँ, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, मैं इसको अलग अलग करके लिख रहा हूँ, ओके। एंड 0 माइनस वी नॉट, ओके, अपॉन R2, इसको पूरा Z2 करके लिख सकते हो अकेला पूरा बना के, ओके। 0 माइनस V2 अपॉन R2 एंड 0 माइनस वी नॉट अपॉन 10 नैनो फेरेड, ओके। सो इसका रिएक्टेंस क्या हो गया, 1 अपॉन J ओमेगा C, ओके। So now you want this is V input upon R1, okay, minus V naught upon R2, okay, minus V naught, okay, this is J omega C. So if you take minus V naught, this become 1 plus R2 J omega C, okay, minus omega 2, this become 1 plus R2 J R2 omega C upon R2. And if you want gain transfer function, so transfer function will be SHS or gain is equal to minus V naught upon VI, okay, that will be equal to minus R2 upon R1, okay, and this one plus J R2 omega C, okay. Now this is the function, okay. Now here, from here we can see what is the cutoff frequency, minus R2 upon R1, okay. And this equation I can write 1 plus J omega, okay, upon omega cutoff frequency omega C, okay. And omega C क्या है, what is omega C? So I can write omega C is 1 upon R2C, that is omega C equal to 1 upon 2 pi F R2C, okay. And frequency is given to us, capacitor also given, frequency also given. So so this is our frequency, okay, 1 by 2 pi R2C, sorry, this was FC will be 2 pi R2C, 2 pi F, okay. So FC will be 2 pi R2C and FC is given 5 kilohertz, okay, 1 upon 2 pi R2C. And we now know what is the value of capacitance R2. So R2 will be your 1 upon 2 into 3.14 into 10 nanofarad, okay, into 5 into 10 to the power 3. So कितना आ रहा है, सॉल्व करके देखो. This should come 3.18 kilo ohm. Five minutes wait. आ रहा सबका? यस सर। शिवेश निकाल के बताओ कितना आ रहा है. Yes, sir, 3.18 kilo. Okay. Yes, sir. 3.18. Now let us see one more question on filter. अब इसको तुमको करना है. I'm giving you 2 minutes time. 0 B input, okay, this is minus plus
Okay, this is given R1, this is given R, and this is given R1. These both are same. Okay, and here we have V naught. Okay, and here I'm applying a capacitor C. So he asking calculate the transfer function. तो ट्रांसफर फंक्शन मतलब V इनपुट और V आउटपुट में क्या रिलेशन है, V नॉट अपॉन V इनपुट निकालो, आसान है. सर ये इन्वर्टिंग और नॉन. इसमें तो दोनों में दे रखा है. यस सर. ओके, सो लेट अस से हियर इज अ वोल्टेज V, यहाँ पे वोल्टेज V आ जाएगा और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, वो बच्चे चले गए क्या? सो okay, so V input minus V upon R1, okay, is equal to V minus V naught upon R1. Okay, first यहाँ से इक्वेशन लेंगे अगर, if you write equation here, V input minus V upon R1, V minus V naught upon R1. Okay, so from here what we can write, V input, okay, plus or V naught, I want V naught, so V naught will be what, 2V minus V input. ठीक है क्या? सर, 2V एक minus बार फिर से ये बता दीजिए सर. सर एक बार फिर से बता दीजिए. बी यहाँ पर सपोज वोल्टेज V है, यहाँ पे वोल्टेज Yes, V sir. होगा. ओके, हाँ सर. सो आई एम राइटिंग V इनपुट माइनस V अपॉन R1. ये करंट, यहाँ तो करंट Yes, जीरो sir. है, यही करंट ऊपर जाएगा. ये करंट क्या है, V माइनस V नॉट अपॉन R1. हाँ सर. तो ये एक रिलेशन, ये मिल गया मुझे एक रिलेशन. ठीक है, Yes. नाउ अगर इस रिलेशन में मैं V का वैल्यू पुट कर दूं तो मुझे V और V आउटपुट और V इनपुट में रिलेशन मिल जाएगा. अब ये V कितना है बता दो बस मुझे. तो V कितना है, ये डेली निकालते हो, सीरीज में है. ठीक है, तो V कितना आ जाएगा आपके पास में. IR सो जस्ट वन मिनट निकालो. So I think V should be V input, okay, R plus 1 by J omega C, ठीक है, into J omega C. So V input 1 plus R J omega C, ये आ गया, ये आ रहा है क्या सर into 1 by J omega C ना. J omega C into 1 by just correct. तो ये कट जाएगा ऊपर जाके 1 plus J omega C कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा. आ रहा है ये, हाँ सर. बस उसको वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर. So if you put the values here, so you get V naught equals to 2 V input 1 plus J R omega C minus VI. Okay, so VI कॉमन लेके नीचे ले जाओ, V naught upon VI, so this become 2, okay, minus 1 minus J R omega C upon 1 plus J R omega C, and if you solve this one, this is transfer function HS equal to V naught upon V1, okay, 2 minus 1 1 minus J R omega C 1 plus J R omega C. Okay, so this is your answer. 1 minus, ये साइन में कुछ प्रॉब्लम है क्या, साइन के अंदर? नो सर, ठीक है सर. साइन ठीक है ना. तो अगर J ओमेगा को S लिख दूं, if J omega is S, okay, this will be HS V naught upon V1
1 माइनस जे ओमेगा को ऐसे लिख देंगे तो एस आर सी एंड 1 प्लस एस आर सी। ठीक है, गेट में आया क्वेश्चन, गेट टीसी में। ओके सर जे ओमेगा को एस मतलब ऐसा लिख सकते हैं, मतलब ऐसा ऐसा एज्यूम किया। अज्यूम नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। एक यू कैन सॉल्व सर्किट यूजिंग लैपलेस टेक्निक्स आल्सो। ओके, लैपलेस अच्छा टेक्निक्स पे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें जे ओमेगा को ऐस करके सॉल्व करते हैं। वो टेक्निक तो हमने अभी हमारे कोर्स में तो नहीं है। ओके, बट यू कैन सॉल्व सर्किट यूजिंग लैपलेस टेक्निक्स आल्सो। तो कभी टाइम मिले तो उसको भी पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। उससे सर्किट बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ओके, मैं भी उसकी वीडियो बनाऊंगा बाद में तुम लोगों का सिलेबस कंप्लीट करके, सो यू कैन चेक दैट वीडियोस। तो वो टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो भी सीख जाते हो तो दैट विल बी एक्स्ट्रा एडवांटेज। उससे क्या है, बहुत से सर्किट आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। एम्पलीफायर का सर्किट है और आपकी ये सर्किट बड़े इजीली सॉल्व हो जाते हैं। सो ओके सर। सो दिस इज, अब सब कुछ आपके सिलेबस में तो नहीं कर सकते ना, है भी नहीं, आप आते भी नहीं इतने क्वेश्चन, इतने टफ आते भी नहीं है जहाँ पे लाप्लास लगाना पड़े। पर आपको अगर अच्छे कमांड करनी है नेटवर्क एनालिसिस पे, सर्किट एनालिसिस पे, देन यू शुड सॉल्व सर्किट यूजिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म। ओके, और उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, 4-5 दिन पढ़ोगे तो वो भी आ जाएगा। दिस इज C2। ओके, दिस इज V0 प्लस, ओके, C, and this is given R2 and this is given R1. So you can solve it now। चाहो तो इसको सिंपल सॉल्व कर दो, इसको बोल दो Z1 और इस पूरे को बोल दो Z2। ओके, या तो फिर केसी लगा के पहले से करो या इनका इक्विवेलेंट निकाल के फिर कर दो। ओके, क्योंकि ये सीधा क्या है, सर्किट का कौन सा सर्किट है ये, इन्वर्टिंग। Converting sir. हाँ, तो बस निकाल लो सीधा सीधा। Z1 कितना है, Z1 विल बी R1 प्लस क्या होता है J, ये ओमेगा J L1 दे रखा है, J ओमेगा L1। और Z2 कितना आ जाएगा, Z2 बोथ आर इन पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल कैसे निकालेंगे हम लोग, Z2 R2 into 1 by j omega C2 R2 इंटू 1 बाय J ओमेगा C2 अपॉन R2 R2 plus 1 बाय J j ओमेगा omega C2। वेरी गुड। सो दोनों बड़े तेज हो गए अब। R2, ओके, सो 1 प्लस J R2 ओमेगा C2 बोला क्या मैंने, C2। ओके, दिस इज योर Z2। नाउ इफ यू वांट करंट I, this is 0, so your current will be V input upon R1 plus J omega L1, okay, equal to 0 minus V0 upon Z2। okay, this is Z1 and you have to write Z2 here। Z2 क्या है, this one R2 1 plus J R2 omega C2। okay, and solving this one you can find V0। so I am writing directly, I am getting V0 value or gain value AV, V input upon V input, I'm getting minus R2, okay, R1 plus J omega L1 and J R2 omega C2 minus 1। चेक इट, आ रहा कि नहीं आ रहा है, Sir, आ रहा है sir. हम्म, Sir, वो negative sign लगा है क्या? ये नेगेटिव है ना, हाँ ये भी नेगेटिव, ये तो नेगेटिव रहेगा ना, यहाँ से जाएगा ऊपर जाएगा, तो इसको क्या ले सकते हो, माइनस V0 1 प्लस J R2 ओमेगा C2, ओके, अपॉन R2। तो सर V, तो V0 अपॉन V0, तो R2 जाएगा माइनस के साथ में इधर R2,
ये नीचे आएगा, ठीक है। या कुछ गलत, यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया क्या? सर नीचे वाला जो माइनस है प्लस का ही साइन। सर प्लस होगा सर। ये प्लस होगा, चलो हाँ। ठीक, चलो हाँ ये माइनस होगा बस, ठीक। ठीक है, ओके। सो Yes, sir. तो यहाँ पे आज ये भी खत्म करते हैं, ठीक है। कल कुछ 10-12 क्वेश्चन और कर लेंगे हम लोग, एंड वी लैंड योर ओपन, ओके। उसके बाद में भी मैं क्वेश्चन डालता रहूंगा वीडियो इस पे यूट्यूब पे, और भी अच्छे से क्वेश्चन डालता रहूंगा तुम्हारे एग्जाम तक। तुम उसको देखते रहना, कुछ नए नए क्वेश्चन। और अभी Yes, sir. ओपन ओपन खत्म करके सॉलिड शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, आई एम स्टॉपिंग हियर। Okay, thank you, sir. थैंक यू सर। सर एक चीज पूछनी थी, वो हाँ। लैप्लास टेक्निक वाला आपने क्या बताया था सर? लैपलेस 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 ट्रांसफॉर्म से भी तुम सर्किट सॉल्व कर सकते हो। जो बुक मैंने तुमको बताई ना सर्किट एनालिसिस की, मैथ्यूज की, हाँ, उसके पीछे के चैप्टर देखना, उसके अंदर हाँ लैपलेस ट्रांसफॉर्म से भी सर्किट सॉल्व करके रखे हैं। और ये बहुत आसानी से सर्किट हो जाएंगे अगर तुम उस पर 3-4 दिन काम कर लो उसके ऊपर। तो आप जो इतना कॉम्प्लिकेशन होता है सर्किट सॉल्व करने में कभी कभी, वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। ओके सर। हम्म। यस सर। सर हम्म। सर थोड़ा क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के लिए कोई भेजेगा हमको, कोई प्रैक्टिस सेट पर? ज्यादा तो है, जो बुक मैंने बताई सर्किट एनालिसिस की, उसके अंदर ओपन के बहुत सारे क्वेश्चन है। सर खुद तो नहीं है उसमें ओपन चैप्टर नहीं है, लेकिन ओपन के क्वेश्चन बहुत हैं। नहीं सर, थोड़ा, वो बुक मेरे पास नहीं है सर। अच्छा मैंने सॉफ्ट कॉपी डाली नहीं क्या अभी तक? मैं आज डाल दूंगा, सॉफ्ट कॉपी डाल दूंगा उस बुक की, ठीक है। ठीक है आज सर। आज डाल दूंगा उस बुक को मैं, जो वरुण ने बोला था, आज डाल दूंगा मैं। ठीक है।